Happy New Year, guys! It's January, and January is not just another month for me because it's my birthday month, and that's why it is so special. And I'll be doing a very beautiful birthday series. Where I'll be sharing with you guys some fun, mother content for you guys that you guys love watching here on my channel. So, yes, without much blabbering, chalo, let's get started with my birthday series. One, two, three, funky. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to the 5th episode of my birthday series, where I'm sharing some beautiful videos and content that you guys love watching here on my channel. So for today's video, I'll be sharing some beautiful laundry guide, bra especially, that you guys keep bombarding and asking me कि इस टॉप के अंदर आपने क्या bra पहना है, इस टी-शर्ट के अंदर आपने क्या पहना है. So yeah, without much blabbering, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस एपिसोड. जब भी मैं कोई भी वीडियो या फिर फोटो डालती हूँ ना, आप में से कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि आपने कौन सी ब्रा पहनी है इस वाले टॉप के अंदर या फिर ड्रेस के अंदर. सो आई थॉट कि लेट मी जस्ट कम हियर एंड शेयर ऑल द स्टफ दैट आई वेयर एंड रिलेट विद माय डिफरेंट काइंड ऑफ टॉप वेयर एज वेल एज ड्रेसेस. तो इट्स गonna बी वेरी सिंपल, कोई फैंसी कुछ नहीं है, ज्यादा महंगे भी नहीं है. पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ढेर सारे ब्राज नहीं चाहिए होंगे. अलग अलग नेकलाइंस के लिए अलग अलग ब्रा आपको नहीं चाहिए होंगे. ट्रस्ट मी, 2 से 3 ब्राज ही आपको मैक्सिमम चाहिए एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड. आपको डिफरेंट नेकलाइंस के लिए डिफरेंट ब्राज नहीं चाहिए. सो डू नॉट worry about it. I will be sharing basic items. उनमें से आप 1 या 2 ले लोगे तो you will be all sorted. So do not worry. The very first bra that I will recommend is a beautiful t-shirt bra that will give you a very good shape to your bust. So जब आप t-shirt या फिर dresses पहनोगे तो अच्छा शेप देगा आपके bust area को and it shouldn't have a lot of gap. Make sure to go ahead and check your size before ordering. अगर आप कहीं जाके अपना साइज चेक करवा सकती हो then it's very good. If not, then आप घर पे ही खुद ही मेजरिंग टेप से साइज को चेक कर सकती हो. So wearing the right size is very important in order to get good fitting bras. So like I said, the very first bra that I will recommend is a t-shirt bra that will give you a very good shape. So the very first kind of bra that I will recommend is a t-shirt bra, and this is a t-shirt bra that I have been wearing for almost a year now, and मुझे ये कहीं नहीं मिल रहा है, and that's why I've stopped wearing it because ये खराब होने लगा है because it's more than a year old and इसका पैडिंग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खराब होने लगा है. This is what the first bra that I have looks like. It's a very beautiful t-shirt bra. It gives such a beautiful lift to the bust, and the dresses, the tops that I wear, it just gives a beautiful shape to all the clothing that I wear, which is the best part. So this is the very beautiful first bra that I will recommend. I have worn this particular bra in a lot of different necklines, be it v-neck, deep neck, sweetheart neck. ये आराम से चल गया. So I have this very beautiful first bra. It's a beautiful t-shirt padded bra that also has a very beautiful deep cut neckline. So you can go ahead and wear with V neckline. That will give you a very good lift to your bust and will make sure that your bust looks fuller and rounder and very gorgeous. So yeah, this is what the first bra looks like, which is so nice, has such a good padding and gives such a beautiful shape to the bust. तो ये रहा. इन सारे टॉप्स के नीचे, इन सारे ड्रेसेस के नीचे आई वॉज वेयरिंग दिस पर्टिकुलर ब्रा एंड गाइस लुक एट द शेप. आजकल सीमलेस वाले टी शर्ट वगैरह ड्रेसेस वगैरह आ चुके हैं. सो दिस इज सो परफेक्ट. आई हैव worn this underneath those seamless t-shirts वगैरह and it did not show up, which is the best part. No matter what kind of t-shirt or dresses I'm wearing, it does not show up, which is the best part. Like I said earlier, I will not recommend different bras for different necklines, just 1 or 2, and I actually mean it. And the next and the last, yes, are you going to be in shock? No, I will not recommend hazaro cheeses just for the sake of the video. So the next and the last pair of bra that I will recommend you guys to invest in is a strapless or a multi-styler bra. बहुत ही आसान हो जाता है when you go ahead and buy multi-styler or strapless bra. You can just go ahead and style it and wear it underneath any kind of top wear. आप देख पा रहे हो मैंने ट्यूब टॉप पहना है एंड इसके अंदर भी मैंने
स्ट्रैपलेस ब्रा ही पहनना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू गाइस आस्क कि ये वन शोल्डर टॉप के अंदर आपने क्या पहना है, ये थीन स्ट्रैप वाले ड्रेस के नीचे आपने क्या पहना है, एंड द ओनली आंसर दैट आई विल गिव यू गाइस टुडे इज अ स्ट्रैपलेस ब्रा। बैंड साइज अच्छा होना चाहिए ताकि फुल सपोर्ट रहे, and you can wear it underneath any kind of necklines. And these are the bras that I have. If you have a nude bra as well as a black bra, you are all sorted. So let's start with this one. As far as I remember, I got this from Jockey. So yeah, I got this from Jockey. आप देख ही पा रहे हो इसका कपिंग वगैरह शेपिंग वगैरह बहुत ही अच्छा है, एंड इट जस्ट गिव्स यू दैट फुल सपोर्ट टू योर बस्ट, keeps it lifted and you look so nice. A lot of times strapless bra ऐसे ही बैठ जाता है, so this right here gives such a beautiful push to my bust that just looks so nice. अगर आपको strap के साथ पहनना है तो आप बिल्कुल पहन सकती हो. If you want that bit of support, you can go ahead and wear it with your straps, but I just love wearing it without my straps and it just works so nice. Because इसका पैडिंग थोड़ा सा हल्का सा खराब होने लगा है. I wanted something a fresh pair, and I got something very similar but in a different color, and this is what I have. This is the same exact bra, just in different color and looks so nice. It has a very good padding, fresh padding. आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है. सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डू नॉट वरी. लुक सो नाइस. आप देख ही पा रहे हो द पैडिंग लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड विल गिव यू अ वेरी गुड शेप, एंड इट वोंट शो अप अंडरनीथ योर clothing, be it any kind of seamless tops or dresses. And इसका again आप देख ही पा रहे हो dipped neck है, so you can wear it underneath your V neck or dip necks and it won't show up. Instead it will give you a very good lift to your bust, making sure that your bust looks fuller and rounder. Most of my laundry are from Clovia. I've been shopping from Clovia for like years and years now. 5-6-7 साल हो चुका है. I have been shopping constantly from their particular store, and I just love the quality, love how they work underneath my clothing and look so nice and keeps me comfortable. So this bra right here retails for $8.99. आपको कई सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, and very recently मैंने ये दो actually ब्रास को ऑर्डर करा है. एक्चुअली में 3 ब्रास मैंने ऑर्डर किए थे, wherein it was like buy 3 at 1,199 or 1,200 rupees, and that's where I went ahead and got 3 bras, but I had to return one of the bras because fitting का issues हो रहा था, and that's why I kept these 2 bras for myself. अगर आप लाइट कलर्ड के क्लोथिंग पहन रहे हो, then go ahead and wear a nude bra. And if you are wearing something in dark color, and if you don't want the bra to be seen, then go ahead and wear your dark color का या फिर black color का strapless bra and you will be all sorted. Strapless bra लो, एक अच्छा t-shirt bra as well as push-up bra and you will be all sorted. Make sure कि आप basic colors को लो, nude bra as well as black bra, and again you'll be all sorted. A lot of times आप लोग ये करते हो कि white bra खरीद लेते हो and you just wear it and it just shows up. Do not go ahead and do it. Trust me, एक साधारण सा nude bra को ले लो and it will not show up. No matter what kind of color you're wearing, it just won't show up. Do not make this mistake of wearing white bras or buying just random white bras and wearing it and pairing it with any of your t-shirts or your dresses. It will show up. So make sure to go ahead and buy a t-shirt as well as push-up bra in black or nude color and a strapless bra in black or nude color, and that's how you'll be all sorted. आप कोई भी neckline की t-shirt या फिर top या फिर dresses को पहन सकते हो without any worries, and just make sure that अगर आप strapless bra ले रहे हो, then just make sure that इसका strap थोड़ा सा broad हो ताकि आपको full support दे पाए and it does not slip. मैं आपको अपना पिक्चर्स दिखाती हूँ एंड लेट मी शेयर कि मैंने कौन सा ब्रा पहना हुआ है. सो इन दिस 2 टी-शर्ट्स और टॉप्स दैट यू सी राइट हियर, इन दोनों पिक्चर में ही मैंने ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रैपलेस ब्रा पहना है. as simple as it gets. ठीक है, कोई झंझट नहीं, कोई आपको माथामारी नहीं करना होगा. So this is the 2 beautiful different kind of necklines that I'm wearing, and as you can see कि bust का shape इतना अच्छा आ रहा है. Why? Because of the padding and the material as well as the shape of the bra. Lot of times gap पैदा हो जाते हैं when you don't go ahead and buy the right sizes or the nice padding वाले bra. So make sure that you're buying the nicest padding वाले bra and your correct sizes.
ताकि इस तरीके से आपके बस्ट को अच्छा शेप आ जाए। इन दिस पिक्चर आप देख पा रहे हो कि आई हैव वर्न अ वेरी ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट नेक का ड्रेस एंड इसके अंदर आई वाज वेयरिंग दिस पर्टिकुलर ब्रा। आप देख ही पा रहे हो, इट गेव माय बस्ट सच अ ब्यूटीफुल लिफ्ट एंड you can't see the bra. Why? Because it has such a beautiful deep cut to it, so it lifts your bust and gives such a beautiful shape. And आप कई तरीके के deep neck वाले टॉप या फिर ड्रेसेस पहन सकते हो विदाउट एनी वरी। इस वाले टॉप में, इस वाले ड्रेस में एंड इस वाले कॉर्सेट टॉप में आई वाज जस्ट वेयरिंग माय रेगुलर strapless bra, nothing very fancy. And in this kind of seamless t-shirts or tops, you can go ahead and wear seamless bras, and I was just wearing my regular nude t-shirt bra जो मैंने आपको पहले दिखाया था। So yeah, that is it for today's video and I hope you guys like it. I will link all the bras in my description box, जरूर check कर लेना and I will see you guys very very soon. तब तक के लिए take care and bye bye.